Hello everyone, welcome to my channel Reskill Upskill. I hope you all are doing great. Today we are going to cover the subject child development and pedagogy. Our topics will be concept of growth, difference between growth and development, and our goal for today will be revision of concept of development and its characteristics, types of development, and understanding the concept of growth and also difference between growth and development thoroughly. So let's start. If we talk about the word child development, many words come in our mind like change, improvement, growth, progress, new, etc. So child development means when a child is born, his body goes through various new changes, and these new changes leads him towards progress, leads him towards improvement. Gradually, he starts recognizing the face of his parents. He starts recognizing his toys and so on. And these changes help him in making more independent. So child development means a series of changes which leads towards progress. Let's see its characteristics now. Development is a continuous process. It starts since birth and goes till maturity. It occurs in an orderly manner and follows a certain sequence. Development takes place in a particular sequence, in a particular order. Like first of all, the child learns to crawl, then he learns to stand up, and then he starts walking after a few months. So there is a particular pattern. In the same way, if we talk about the stages of development in human body, they also take place in a certain sequence, like infancy, early childhood, late childhood, adolescence, maturity. It is quantitative as well as qualitative process. Now, when we are talking about development, it means an overall growth of the child, which includes all aspects: physical, emotional, social, intellectual, etc. So here it is quantitative means if we are talking about only physical aspects, that is increase in height, size, length of the body, so that can be measured easily. So that is quantitative. Whereas development includes other aspects also which can't be measured perfectly. Like we can't measure social, moral aspect of the child in a perfect way. So if we talk about development, if we talk about only physical aspects, that means we are talking about only growth of the child. Next, development is also possible without growth. Now, if the child is not physically good, is not growing well physically, this is not necessary that he or she will not be doing good in other aspects also. So it can be said that development is also possible without growth. As we have already covered the topic of types of development in the previous video, we are just going to quickly revise it. First, let's talk about physical development. It includes muscle strength, balance, coordination, and postural control. All the physical activities come under this concept only. Gross motor skills like catching, running, etc. Fine motor skills like writing, painting. This also this is also included in physical development. Intellectual development, which is also known as cognitive. This means how the child perceives anything. It is related with the process of thinking and reasoning. Social and emotional. In social development, the child learns to interact, learns to communicate with the other people of the society. Emotional development makes the child learn how to manage his emotions in a particular situation. During language development, the child learns to express his views in different mediums. There are various mediums of expressing your views like speaking, sign language, writing, etc. If we are talking about moral values, that means the way to distinguish between right and wrong. When the child learns to communicate in the society,
he is also able to reason. He is also able to distinguish what is right and what is wrong, and then he can make the decision accordingly. Now let's come to the concept of growth. Growth is mainly related with the physical aspect of the body. So that means change in size or shape of the body. That is growth. Increase in size, length, height, weight. That is growth. Now let's see some of the words which will help us in understanding the meaning and its characteristics. First of all, increase or change. So growth means increase in height, weight, etc., or we can say changes in shape or structure of the body. So this is also covered. Next is quantitative. It is quantitative in nature. That means it can be measured easily. We can easily check, we can easily measure the weight of the child, we can easily measure the height of the child. So it is quantitative in nature. Possible to measure. That also we have covered, that we can easily measure the growth of the child as it is just related with the physical aspect. Now let's understand the difference between growth and development. Physical sense. If we are talking about growth here, physical sense. इसका मतलब है कि growth जो है सिर्फ physical aspect से related होता है. जैसे बच्चे का weight बढ़ना, उसकी height बढ़ना, ये सब growth के अंदर आता है. डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंजेस, मतलब उसमें सब तरह के जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं. फिजिकल के साथ साथ उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे, जैसे सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल. सो इट मींस डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड होता है, इसलिए वो इजीली मेजर भी हो सकता है. Then development is quantitative as well as qualitative. डेवलपमेंट फिजिकल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करता है और बाकी एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करता है, इसलिए वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के साथ रिलेटेड होती है तो वो इजीली मेजर हो सकती है. हम इजीली बच्चे का हाइट बता सकते हैं कि कितनी हाइट है. इजीली हम बता सकते हैं उसका वेट कितना है, उसका वेट पहले कितना था, अब उसका वेट कितना है. सो इट कैन इजीली बी मेजर्ड. इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर. हम उसकी फिजिकल एस्पेक्ट तो इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बाकी एस्पेक्ट्स इजीली मेजर नहीं कर सकते. हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि ये बच्चा सोशली कैसा है या ये बच्चा मॉरली कैसा है. नेक्स्ट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस, जबकि ग्रोथ जो है उसका एक पार्ट है. डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट. डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. अगर बच्चा फिजिकली अच्छे से ग्रो कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा करे, जैसे वो सोशली अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअली अच्छा होगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है. हो सकता है बच्चा फिजिकली बहुत अच्छा है, इज गुड इन स्पोर्ट्स, बट ही इज नॉट गुड इन अदर एस्पेक्ट्स. मॉरल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, जरूरी नहीं है कि वो उन एस्पेक्ट्स में भी अच्छा होगा. डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. लेकिन अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो बाकी एस्पेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता. सो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. ग्रोथ जो है वो पूरी उम्र हमारे साथ नहीं चलती रहती, नहीं बढ़ती रहती है. ऐसे जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे हमेशा हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती रहती है. जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मॉरल है, सोशल, इंटेलेक्चुअल, उसमें चेंजेस जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलते रहते हैं. लेट्स रिकैप्चुलेट नाउ. ग्रोथ मीन्स चेंज और इंक्रीज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. जब बॉडी की शेप या स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं. इट कैन इजीली बी मेजर. ग्रोथ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं. इट डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ.
ये पूरी लाइफ हमारी कंटिन्यू नहीं रहता। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात नहीं होती है, उसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं होती है। इट इज एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड जिसमें सारे एस्पेक्ट्स उसके कवर होते हैं। एंड इट कैन नॉट बी इजिली मेजर्ड। डेवलपमेंट को इजिली मेजर नहीं किया जा सकता। सो आई होप you have liked the video and you have learned something today. Do like, share, subscribe, and comment. Till then, keep learning and keep improving your skills. Thank you so much for watching it.